Okay, great. So let us begin. कुछ अपनी पंक्तियों के साथ शुरू करूंगी। आंखों में सवालों का तूफान, सिसकियों की चुभन का आह्वान, अश्कों को चुप पी जाना सच नहीं है आसान। माथे की शिकन कहती है 100 कहानियां, भीतर उठते तूफान पर चेहरे पर सन्नाटे की निशानियां। चीखे मन को छल्ली कर अंदर सिमट जाती हैं। कौन क्या कहेगा इस डर से कितनी बातें चुप रह जाती हैं। भावनाओं के समंदर में रोज गोते खाती हूँ, इन अनकहे सवालों के जवाबों की खोज में रोज निकल जाती हूँ। सो हेलो, गुड आफ्टरनून, राम राम, साई माँ का आप सभी को प्यार भरा सलाम। So I welcome you all in the third episode of Aashayein, which is about feelings and cancer. So आशाओं के इस तीसरे एहसासों से बने और एहसासों से जुड़े एपिसोड में मैं तहे दिल से आप सभी का स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, एकदम मस्त होंगे। And I want every warrior to switch on the cameras so that we all can see you. हम सब आपको एकदम लाइव आमने सामने देखना चाहते हैं, जैसे मैं अभी मीनू मैम को देख सकती हूँ। सो आई वांट टू सी एवरीबॉडी विद द कैमरास एंड वीडियोस ऑन। एंड जैसे मैं हर बार कहती हूँ कि कुर्सी की पेटी अच्छे से बांध लीजिए, क्योंकि हमारा आशाओं का विमान उड़ान के लिए पूरी तरह तैयार है। और जब मैं तैयार होती हूँ, मैं पूरी एंथुजियाज्म, पूरी भावनाओं के भंवर में भरे एंथुजियाज्म के साथ तैयार होती हूँ। तो आप सब तैयार हो जाइए। सबसे पहले मैं शुरुआत करती हूँ आभार से। I would like to express immense gratitude to the esteemed panelists, our special invitee, and our distinct audience for joining hands to address an issue of pivotal importance. एक ऐसा सवाल, एक ऐसा लफ्ज, feelings, जिसके बारे में शायद कभी बात ना हुई हो या हुई हो तो कम हुई हो. This initiative is exclusively for the cancer patients, caregivers, as we know how tough the journey becomes once big C is attached to one's life. ये बिग सी थोड़ा तकलीफ तो देता है, हम सभी जानते हैं। और जैसा मैं हर बार कहती हूँ, आशाएं वही हाथ है जो हर मुश्किल में एंड खास करके इस मुश्किल में हमेशा आपके साथ है। So here we are to join hands with all the cancer patients to help make this journey as easy as possible. We are lucky as Me and You Can Care and Grameen Sneh Foundation have joined hands to have these episodes of Aashayein every month for all of you to help get answers of all the questions which often haunt you, trouble you. सारे ऐसे सवाल, सारी ऐसी परेशानियां जो आपको परेशान करती हैं, आपके दिमाग में घूमती रहती हैं, आपको सोने नहीं देती, उन सभी सवालों के जवाबों को हम आपके सामने पेश करते हैं, हाजिर करते हैं। Aashayein is a cancer support group working towards empowerment of cancer patients, empowering them with knowledge, willpower, and positivity. So remembering some beautiful lines. हाँ, मुश्किल होगा कभी सफर, पर तुम टूटना मत। जमाने से भले दूर हो जाना, पर खुद से रूठना मत। कुछ अच्छे बुरे भी लोग मिलेंगे, आज मुरझाए तो कल फिर से खिलेंगे। हिम्मत रखना बस, हारना मत, अपने सपनों को दिल से मारना मत। लग जाए जो चोट कभी तो थोड़ा सा दर्द सहना है, टूट जाए अगर उम्मीद ना हार कर रहना है। जीना है अपनों के लिए तुम्हें, खुद से ये कहना है। हाँ, मुश्किल होगा सफर कभी, पर तुम टूटना मत। जमाने से भले दूर हो जाना, पर खुद से रूठना मत। So together we will and we can. So शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की। एंड जैसे मैं हर बार आपको याद दिलाती हूँ, हमारा सेशन इज डिवाइडेड इनटू 2 segments, and yes, we have a special third segment for you, and this is something exciting, and इसका मैं आपको एंड में बताऊंगी what this third segment is all about. So we have the first segment जो है बातें अनकही जो है जरूरी, in which our panelists will address the gathering and आप सभी के प्रश्नों का जवाब देंगे. And second segment is hearing and felicitating our cancer warrior, जो हमें याद दिलाते हैं कि हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती, जो आज हम सबको अपनी कहानी से प्रेरित करेंगी और हमारे अंदर हौसले की शक्ति भरेंगी। इस योद्धा की कहानी इनकी ही जुबानी सुनने के लिए हमारे साथ अंत तक जरूर जुड़े रहिए। और हमारे साथ एंड तक जुड़ने की एक और वजह आपको दे देती हूँ। सो वी हैव इंट्रोड्यूस्ड अ स्पेशल सेगमेंट ऑफ क्विज। आज जो भी चर्चा हम करेंगे उसे ध्यान से सुनिएगा। उसी चर्चा के अंदर से मैं आप सबके सामने 2 सवाल पूछूंगी,
उन 2 सवालों का जो सबसे पहले जवाब देगा चैट बॉक्स में, हमारी टीम मॉनिटर कर रही है, सहेली इज देयर टू मॉनिटर, द फर्स्ट वन टू आंसर द क्वेश्चन विल गेट अ स्पेशल सरप्राइज प्राइज, एंड उसका अनाउंसमेंट वी विल हैव इन द नेक्स्ट सेशन ऑफ आशाएं. सो प्लीज अच्छे से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, एंड आई वांट टू हैव द बेस्ट विनर्स. So this episode is particularly dedicated to feelings and cancer. कैंसर शब्द भावनाओं का सैलाब है. ये भावनाओं का वो समंदर है जिसमें हम डूबते हैं, उभरते रहते हैं. जिस दिन हमें पता चलता है कि हमें कैंसर डायग्नोसिस से लेकर कैंसर ट्रीटमेंट के एंड तक हम सभी ना जाने कितने इमोशनल टर्मोइल से गुजरते हैं, गिरते हैं, फिर उभरते हैं, फिर लड़खड़ाते हैं, फिर संभलते हैं. सभी डॉक्टर के बारे में बात करते हैं, ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं. कहीं जो बात अनकही रह जाती है, अनसुनी रह जाती है, वही हमारी फीलिंग्स. व्हाट एक्चुअली वी फील. ऐसे कौन से इमोशंस हैं जो हम फील करते हैं, जिनको जो हमारे अंदर उभरते रहते हैं ड्यूरिंग द डायग्नोसिस ऑफ कैंसर. फ्रॉम द डे कैंसर इज diagnosed to treatment to end, we have variety of emotions that we go through. So today we have eminent panelists to address all these questions related to feelings. We are lucky to have with us Dr. Prerna, Senior Consultant Clinical Psychologist, Max Vaishali. We have Professor Dr. Meenu Walia with us, who is the driving force behind all these initiatives that we have. We have young, enthusiastic Dr. Jyotsna with us. So let us encapsulate our mind, body, and soul with the knowledge of our panelists and bust all myths, clear all air, and अपनी सारी feeling से related हर जवाब को आज तलाश लेते हैं, आज ढूंढ लेते हैं. आज अपने पैनलिस्ट को खंगाल लेते हैं कि आप बैठिए, हमारे सवालों का जवाब दीजिए. So let me begin with introduction of our first panelist. And Dr. Meenu Walia का introduction देते में I feel like I sit like this with 36 inch का सीना चौड़ा करके, and I would like to introduce Dr. Meenu Walia like this. So Dr. Meenu Walia is a renowned medical oncologist in National Capital Region of India. She has been dedicated in serving cancer patients for about 3 decades and continues to do so with full conviction. Currently, she superheads the Department of Medical Oncology, Hematology at Max Super Specialty Hospital. She is actively involved in clinical cancer research at global level and is the principal investigator for various global oncology research. She has been decorated with various awards. The list is very long, and I think they just keep on adding. She is the founder member and actively involved in development of support groups for cancer patients. We welcome Dr. Meenu Walia and are full of gratitude for taking up a cause which needs voice and support. And if somebody like Dr. Walia is with us, and she becomes the spine of a cause like Aashayein, then I'm sure we have way to go. So we welcome you, Dr. Walia. Moving on, I would like to introduce our second panelist, Dr. Prerna. Dr. Prerna Khanna is a renowned clinical psychologist with more than 15 years of experience of working in the field. She is currently practicing as a senior consultant clinical psychologist at Max Super Specialty Hospital, Vaishali. She's an ex-assistant professor of psychology. So I can relate with you, Dr. Prerna, whenever I hear a professor word there, I can relate because I am currently at the same position, but I'm not as experienced as you are, definitely. So she is an RCI registered clinical psychologist. She has done her MPhil in clinical psychology from Institute of Human Behavior and Allied Sciences, Delhi. She has completed her PhD. She has furthered her professional development. So we have a lot of academic knowledge right over here in front of us with Dr. Prerna, where she has advanced cognitive behavior therapy and mindfulness-based interventions from London, UK. So all the जितने भी हमारे पास cancer survivors अभी यहाँ मौजूद हैं, please, we have एकदम epitome of knowledge right here with us today, with all the panelists that we have. So with joined hands and full of gratitude, here I am, Saima, welcoming you, Dr. Prerna. So moving on is our third panelist, Dr. Jyotsna, a young and enthusiastic, skilled and dedicated mental health professional with demonstrated success in providing exceptional care and implementing effective treatment plan for patients with varying mental health issues. She specializes in depression and anxiety. She's compassionate, professional, and effective motivator with an inherent ability to manage many types of personalities. So we welcome you, Dr. Jyotsna, as well. So अब हम शुरू करते हैं हमारे first segment से,
which is बातें अनकही जो है जरूरी. Let us begin with the first question. And this question is for Dr. Meenu Walia. Ma'am, how do we deal with the different reactions of the society? हमें कैंसर हो गया, ठीक है, मुझे कैंसर हो गया, ठीक है, बट ये जो सारे रिएक्शंस मुझे सोसाइटी से मिलते हैं और उन रिएक्शंस की वजह से मेरे अंदर जो सारे इमोशंस उभरते हैं, मैं उनका क्या करूं? How do I deal with them? In simple words, ignore. So that is my only advice to each and every patient. And I keep on telling everybody, at one point in our life, cancer or no cancer, at one point in our life, we need to decide कि हमें लाइफ से क्या चाहिए, हम जिंदगी से क्या चाहते हैं, और हम क्या दूसरों के ओपिनियन या दूसरों के उसी के लिए जीते रहेंगे. So it is not about everybody else around. It is more about what I want in life, what I want to do in my life. And सबसे ज़्यादा important होता है my own conscience. I have to answer to that conscience. So कोई आपके बारे में क्या बोल रहा है, तो that is जैसे जैसे हम mature होते हैं, I'll say it is not only the age, it is the maturity of the soul also. We have to stop thinking कि लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं या आपके बारे में क्या बोल रहे हैं. इट इज मोर अबाउट कि क्या मैं सही हूँ, क्या मैं अपने आप को अपनी आईने में शक्ल मिला सकती हूँ, आंखों में आंखें देख सकती हूँ, क्या मैं भगवान को जवाब दे पाऊंगी. तो इट इज मोर अबाउट दैट. सिमिलरली व्हेन वी से कि व्हाट द पीपल आर थिंकिंग अबाउट मी, हाय मैं कैंसर पेशेंट हूँ, मेरे को ये हो गया या मेरे साथ क्या होएगा, this is something that should be least of my concern. Rather, I will say in the journey of a cancer patient, जो मैं हमेशा बोलती हूँ, मतलब मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है और मैं अभी ऑलमोस्ट हर दूसरे दिन ये रिपीट कर रही होती हूँ किसी ना किसी को, कि हमने देखा है कि जितने भी जो कैंसर पेशेंट्स हैं, जो कैंसर सर्वाइवर्स हैं, the less number of people they talk to, better are those people, better are those patients, because जितने आप लोगों से बात करोगे, जितनी बातें करोगे, everybody comes with their own opinions, own advices, सुझाव, and there is just bombardment everywhere and you go all confused. If at all there is a diagnosis of cancer, I have seen the best families, the best patients who can cope with it, they just tell the limited number of people around, just a handful who are their real support, real what I say pillars of support, सिर्फ उनको बताओ. और you have to fight this disease, you have to come out of this disease, and it is just the close family that should be part of, close family, friend or whatever, that should be part of it. जितना ज्यादा बोलते हैं उतने ज्यादा ओपिनियंस आएंगे, उतने ज्यादा वो होता है, कंफ्यूजन ज्यादा क्रिएट होता है. एंड एटलीस्ट व्हेन वी आर फेसिंग दिस बीमारी, रादर एनीथिंग इन लाइफ, वी शुड फॉरगेट अबाउट कि दुनिया क्या सोच रही है और दुनिया क्या कहेगी, है ना. वी हैव टू सी व्हाट इज बेस्ट फॉर अस एंड हमें क्या करना है. So मैम, जैसे कुछ लोग होते हैं, they just go into their shell, like कैंसर हुआ उसके बाद उन्होंने दुनियादारी छोड़ दी, तो क्या वो ठीक है? वो ठीक है कि यू गो इनटू योर शेल एंड यू डोंट टॉक टू एनीबॉडी एंड आप पूरा सब कुछ छोड़ दो, या मिलना जुलना इन इंटरैक्शन हील्स? व्हाट डू यू थिंक अमंग्स दीस टू इज बेटर, या इक्विलिब्रियम ऑफ दीस टू इज बेटर? So देखो, there are a lot of studies. I mean, the recently only I was discussing with somebody कि there are scientific studies that say that people who have a very active social life, they live longer. Yeah. So if you are, because that social life is also your, what you say, emotional coverage, it is also your it is also something that keeps you pepped up, keeps you motivated, keeps you something to look forward to. Yeah. So what I generally say is, I mean, definitely going into a shell is another extreme and it is more catastrophic. But what one needs to continue is, we cannot expect कि आज कैंसर का डायग्नोसिस बना है and life will continue the same, है ना. But sooner or later the life has to come back to the path that it was original. If I was a very outgoing person, if I was a very social person, if I was somebody who would love parties and everything, then I should continue with that. Try to do it even when I am getting treatment, taking my doctor into confidence and asking. There's no point in isolating about it. But
when we say that कि ज़्यादा बातचीत नहीं करनी, I say don't talk about your illness. Don't have opinions from hundreds of people. But that doesn't mean you don't be social. You should be talking about, you should continue with your activities. You should always have something to look forward to. Yeah, definitely. That is what, ma'am, we should, maintain an equilibrium. ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही अंदर सिमट जाए, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही हर दूसरे आदमी को मिलकर बताते रहे कि मुझे कैंसर हो गया. So एक पूरा एक equilibrium बना के चलना चाहिए. And absolutely right कि people, and I know there is a participant right now, and I want, this question was specifically for you, ma'am. She has stopped interacting. She has stopped talking to people. She has stopped her social life just because after her diagnosis. So this was specially for you, direct from the horse's mouth. And ma'am has explained it pretty well कि जिनकी social life ज़्यादा active होती है, they can fight this disease much better. So ma'am, moving on. So I just interrupt here, Saima. If there is somebody who has, after this diagnosis, stopped talking, stopped interacting, that is very, 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 very detrimental. What I'm talking about two different things. These are entirely two different things. Our social life is a support. If we stop talking, हम और अंदर से खत्म हो जाएंगे. We have to share our burdens. We have to live life fully. Our best patients are people who live life fully. I know, there's so many of my patients. I know a husband and wife couple who would come for chemo, and with every chemo they will plan कि this was pre-COVID, of course. With every chemo they will plan कि कौन सी नई movie आनी है, इस chemo के बाद हमने शाम को वो theater में जाके movie देखनी है. This is what I say, to look forward to things. So this is something, going into your shell is not going to help anybody. Absolutely, ma'am. That is what, and I think now that ma'am will particularly listen to you and she will regain her social life and be active again. So I would like to rope in Dr. Prerna here. I think ma'am is here. I can't see her. Yes, Saima ji. Hello, yes. Ma'am. How are you? I'm absolutely wonderful, and thank you, Saima, for that introduction, and thank you to Dr. Meenu Walia, and thanks to Aashayein Cancer Support Group for having me in this panel. It's truly an honor and pleasure to be here today. Same here, ma'am. We witness and experience the same vibes that we are getting from you right now. So, ab main aapko second question I would like to ask you. How to, ma'am, the stigma of cancer which is there, this society has stigmatized this word, and us ek shabd ki wajah se there are 1000 emotions that have associated with it. Like for example, cancer ho gaya, then uske baad ke jo stigma hai, wo kya bolega, ye kya bolega, ab kya hoga, ab main kya karu. This, how to deal with the stigma of this word. मैम जो आप स्टिग्मा की बात कर रहे हैं, ये इतना डीपली इफेक्ट करता है कैंसर, पूरी कैंसर जर्नी में. बट दिस स्टिग्मा इज नॉट ओनली इन सोसाइटी, समटाइम्स इट इज आल्सो इन द माइंड्स ऑफ द पेशेंट देमसेल्व्स. वो लड़ाई हमें यहाँ से पहले शुरू करनी है, देन इट कम्स टू द फैमिली एंड देन इट कम्स टू द सोसाइटी लेवल. कितनी बार ऐसा होता है इवन बिफोर द डायग्नोसिस ऑफ से कैंसर, because of this fear of being labeled as a cancer patient, I have seen so many people who are, just holding themselves back from getting screened. कि ये हो गया तो क्या होगा. In fact, cancer तो एक काफी एक serious diagnosis है. I have seen even in COVID, लोग बोलते थे आपको सर्दी जुकाम है, आप टेस्ट करा लो. नहीं, ये तो मन में वहम हो जाएगा अगर पॉजिटिव आ गई रिपोर्ट. So stigma is ingrained here. कि हम it prevents us from getting screened, it prevents us from seeking the right treatment. तो ये बहुत जरूरी है कि आपके खुद के जो inhibitions हैं हम उसको पहले overcome करें. Don't allow this diagnosis to bring up sense of certain shame or responsibility. काफी लोग सोचने बैठ जाते हैं हमने ऐसा क्या किया है कि हमको हुआ है. What have we done? Is it because of some past sins? ऐसे कोई cultural beliefs चले आ रहे हैं जो कि स्टिग्मा को और परपेचुएट कर रहा है हमारी सोसाइटी में. So we need to get rid of all these kind of thinking patterns, right? We need to offer support. We need to seek the right treatment. We get, getting treatment is the first step of destigmatizing. कई बार किसी कैंसर सिचुएशंस में ये स्टिग्मा की फीलिंग और ज्यादा गहराई जाती है, जैसे कि लंग कैंसर हो गया या माउथ कैंसर हो गया.
वहां पहला ही थॉट ये आता है कि शायद ये टोबैको लेते होंगे या स्मोकिंग करते होंगे जिसकी वजह से इनको है। ऐसे पेशेंट्स में और ज्यादा जरूरी हो जाता है दैट यू ऑफर देम सपोर्ट। द आइडिया इज नॉट टू पुट ब्लेम ऑन एनीवन, द आइडिया इज टू हेल्प देम, सपोर्ट देम इन द जर्नी इन क्विटिंग द हैबिट इफ दे हैव ऑलरेडी मैनेज्ड टू क्विट, you know, praise them, encourage them, and then take them towards, you know, the healing process, the treatment process, right? Stigma kahin coming to the family also बहुत ज्यादा, जैसे कि डॉक्टर मीनू वालिया ने बताया है कि बहुत ज्यादा हमको इधर उधर नहीं बात करनी है, बट क्लोज सर्किट में जिनको हम ट्रस्ट करते हैं उनके साथ हम इस बारे में खुल के बात करें। Even if we are part of, say, some support groups, if we can talk openly about it, it can definitely bring a change in other people who may be facing some, you know, similar challenges. उनको भी encouragement मिलेगा कि, you know, इस condition के बारे में खुल के बात होनी चाहिए, इसमें कोई hesitation नहीं होनी चाहिए। And then finally comes the society. At society level also we should be interacting more responsibly. ऐसे cultural beliefs को हमें promote नहीं करना चाहिए that puts the blame onto the cancer patient as if they have done something to call it upon themselves. Unfortunately, you know, in media also, अगर आप कोई भी Bollywood movie उठा के देख लेंगे, they treat cancer diagnosis as a death sentence, कि किसी भी character को अगर cancer है मतलब उसका अंत निश्चित है। सो अनफॉर्चुनेटली हमारी मीडिया में भी इसी तरह से पोर्ट्रे किया जाता है जिससे कि स्टिग्मा बढ़ता है। सो एट ऑल लेवल्स वी नीड टू हैव ओपन डायलॉग्स सच एज दिस, जो आपके प्लेटफॉर्म पे आशाएं जो एक कोशिश कर रहा है, ये एक बहुत अच्छी पहल है। वी शुड हैव मोर ऑफ सच, यू नो, इंटरैक्शंस, ओपन डायलॉग, सपोर्ट ग्रुप्स, एंड दैट change has to start from within. If we can accept and normalize it, that will be the starting point in destigmatizing in the whole society at large. Absolutely. So ma'am, like I would like, अब मैं डॉक्टर मीनू वालिया and आपसे दोनों से एक एक करके the same question, and I want answers from both of you. So my question is, the 5 emotions या top 5 feelings which you both feel कि एक कैंसर पेशेंट अपनी जिंदगी में उनको ऊपर कर दे so that बाकी सारी चीजें या बाकी सारी परेशानियां कम हो जाएं. Which should be the top 5 feelings and how? How should one cancer patient do it? Dr. Meenu is. Yeah, Prerna, please you carry on. I did not hear the question. Can you repeat the question again, Saima? Yes, ma'am, definitely. Ma'am, top 5 feelings, emotions which according to you are the best and will help a cancer patient in their journey of cancer. And ऐसे कौन से, how should we, you know, prioritize these top 5 feelings in our lives, in a cancer patient's life, and how? कैसे करें? And कौन सी होनी चाहिए? देखो, there are 2 different things. एक तो कौन सी होनी चाहिए और एक है कौन सी होती है ना? जो होती है वो बहुत डिफरेंट है और जो होनी चाहिए। लाइफ में सब कुछ वैसे नहीं होता जैसा होना चाहिए। So normal, what I say is, what are the top 5 feelings which I see commonly in a cancer patient? सबसे पहले तो why me? बाकी चीजें तो सब बाद में गई कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है और ये सभी के साथ होता है। शायद उनकी जगह मैं भी होंगी तो मेरे साथ भी यही होएगा, क्यों हमारे साथ ऐसा हुआ, क्या हमने ऐसा कर्म करा था, क्या हमने किसी का दिल दुखाया था या कैसा क्या करा था कि जिसकी वजह से ऐसा हुआ। एंड देन other feelings are definitely कि why, I mean, अब आगे क्या है, मतलब what you say कि there's lot of what do you say uncertainty about future. ये एक ऐसी बीमारी है, मतलब rather I say कि there are 2 illnesses जिससे लोगों को सबसे ज्यादा डर लगता है. One is HIV and one is cancer. Why? Because there is lot of uncertainty not only about the disease but also about the treatment. ट्रीटमेंट का भी भय है, ट्रीटमेंट का भी डर है। एक तो डिजीज का तो है ही है कि अगर कैंसर हो गया तो अब क्या, मतलब आगे क्या होएगा, पर उसके अलावा ट्रीटमेंट का भी इतना ज्यादा भय है कि पता नहीं कीमो में क्या होएगा, मेरे साथ क्या होने वाला है। कितने लोग आते हैं कि कीमो कैसे होती है, क्या बिल्कुल बाल उड़ जाएंगे या मेरा बिल्कुल रंग काला हो जाएगा, या रेडिएशन कैसी होती है, क्या शरीर पूरा जल जाता है। So there is a lot of bhai about the treatment also, and then there is a lot of fear about even after treatment, because
I distinctly remember yesterday only I was talking to the mother of one of my patients, a young boy who has recently gone to the treatment through the treatment, and fortunately in today's date his cancer is all right, absolutely all right, is in control. But the mother was almost in tears, a very educated lady, and was almost in tears. And she says, "Ki, I do not know how to deal with my son because he's मतलब what he talks about is he's always like that कि कहीं कैंसर वापस तो नहीं आ जाएगा, मैंने कितनी देर और रहना है, अभी दिस बॉय इज जस्ट इन कॉलेज में शुरू में, अभी शादी भी नहीं हुई, तो the fear of cancer coming back even after successful treatment, so there are a lot of things that happen. These are the top emotions that we see in our cancer patients. But what should be the emotions is definitely there should be only one emotion, I should say, faith. Faith is something that moves mountains. Faith Yes. is something that actually makes a difference. Having faith कि ऊपर वाले ने जो लिखा है वो होके रहेगा. I always tell my patients, बिल्कुल ठीक ठाक इंसान सुबह घर से निकलता है, मालूम नहीं होता घर वापस आएगा कि नहीं. ये चीजें होती है, हमने देखी है. A diagnosis of cancer does not mean death. अगर ऊपर वाले ने लिखा है कि आपने जिंदा रहना है, whatever we all say, whatever everything say, that doesn't mean कि we have seen people coming out of cancer, living with the disease, coming out of the disease, everything can happen. So having faith on whosoever you believe, I think is the most important thing that the patient should carry on with. Absolutely agree with ma'am. You know, जैसे आप very apt title आशाएं, एक resilience, एक hope की तरफ हमें देखना चाहिए. But having said that, I also would like to add कि जहां तक emotions का सवाल है, हमें कोई भी एक ये do's and don'ts के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए. We should allow and embrace whatever emotions is coming or the person is experiencing at that point of time. जैसे आपने अपने इंट्रोडक्शन में कहा था, ये कैंसर वर्ड एक भावनाओं का सैलाब है, अलग अलग स्टेज पे अलग अलग भावनाएं आएंगी. सो वी नीड टू अंडरस्टैंड, अलाउ its expression, allow its ventilation so that we can make progress, whether negative or positive. ये भी जरूरी नहीं है कि ये emotions हमेशा positive ही हो. It's important to also be in contact with one's painful feelings. It's important to acknowledge what we are going through and how we can come out of this phase. So acknowledgement and ventilation and free expression is what is required, no matter what the emotion is. So ma'am, अगर कोई रो रहा है तो we should just let them cry, because रोने का मतलब ये नहीं है that आप weak हो रहे हो या you will just break down. What do you say? अगर if a patient cries, so we should let her cry. See, crying is also an expression of sadness. जैसे हम खुश होते तो हम हंसते हैं, हम उदास होते हैं हम रोते हैं. It is an expression of underlying emotion कि हम उदास हैं उस टाइम. उस टाइम पे एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना बेहद जरूरी है. खाली बोल देना कि चुप हो जाओ सब ठीक हो जाएगा कैन बी मोर हार्मफुल, बिकॉज दीज आर फॉल्स रीअश्योरेंसेस. जब अगर एक ऑब्जेक्टिविटी मेंटेन करनी है, इट्स इंपॉर्टेंट टू अलाउ द पर्सन टू एक्सप्रेस व्हाट दे आर फीलिंग. अगर कोई एंजाइटीज हैं, कोई डर है, कोई सैडनेस है, तो उसको बाहर निकलने देना चाहिए उस टाइम पे, बजाय कि उसके ऊपर एक सॉर्ट ऑफ कवर लगा दे कि नहीं ये आप मत एक्सपीरियंस करो. बिकॉज हर बार एक कैंसर पेशेंट के लिए वो अनड्यू स्ट्रेस का कारण बन सकता है, दैट इफ दे हैव टू कीप अ ब्रेव फेस ऑल द टाइम, और इफ दे हैव टू कीप अ हैप्पी अपबीट एटीट्यूड ऑल द टाइम कि नहीं मेरे परिवार वाले उदास हो जाएंगे अगर मेरे आंखों से आंसू निकले. सो वो ऑलरेडी एक ओवर टैक्स्ड साइकी है, एक ऑलरेडी एक अंदर इमोशंस चल रहे हैं, ओवरवेलमिंग सिचुएशन है, उसमें अगर अपने ही इमोशंस को उन्हें दबाना पड़े, it will be far more tougher to deal with the whole situation. So once in a while, if there is, it's like a waxing waning course. कभी हम upbeat हैं, कभी हम उदास हैं, ये एक normal adaptation process है. But अगर आपको कभी भी किसी भी patient में एक ये prolonged sadness और crying का trend अगर लगता है, तो बहुत जरूरी है कि हम उस पेशेंट को स्क्रीन करवाएं. जैसे कि आपने कहा था कि कोई मैम है जो बहुत ज्यादा आइसोलेट हो गई हैं. कई बार
क्राइंग एक एविडेंट एक सिम्टम नहीं होता, एक आइसोलेशन, एक विड्रॉन बिहेवियर could be a sign of underlying depression. It is very important to get the person screened. अगर आपको लग रहा है कि 2 हफ्तों से ज्यादा अगर कोई उदासी चल रही है या क्राइंग स्पेल्स चल रहे हैं, एक प्रोलॉन्ग्ड विड्रॉल है, लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन एक्टिविटीज, डेली रूटीन एक्टिविटीज है, या बहुत ज्यादा कैटास्ट्रोफाइजिंग हो रही है, बहुत ज्यादा फियर एंड एंजाइटीज हैं आपकी फ्यूचर में क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है, बिकॉज कैटास्ट्रोफाइजिंग इज ऑल्सो वेरी सिम्टम जो बहुत ज्यादा देखने को मिलता है कैंसर पेशेंट में, कि हम सीधा वर्स्ट केस सिनेरियो अपने लिए इमेजिन कर जाते हैं, बीच की पॉसिबिलिटीज हम नहीं कंसिडर कर पाते हैं. कैंसर रिसर्च ने ऑलरेडी कितनी एडवांसेस कर ली हैं, सो वी नो कि एट एवरी स्टेज वी हैव a fair life expectancy through researches and doctors can guide us on that. So अगर किसी में ऐसे prolonged symptoms आ रहे हैं, it is important to get them screened from a mental health professional and start the treatment at the earliest. बहुत अक्सर ऐसा होता है कि एक तो lack of awareness है, depression क्या है, anxiety क्या है, उसके ऊपर से कई बार स्टिग्मा की वजह से, अगेन जितना स्टिग्मा कैंसर में है उतना ही स्टिग्मा गोइंग टू अ साइकोलॉजिस्ट और साइकियाट्रिस्ट है कि हम एक मेंटल हेल्थ पेशेंट थोड़ी हैं कि हम जाएंगे. तो स्टिग्मा कई बार प्रिवेंट करता है, कई बार इग्नोरेंस प्रिवेंट करती है. लोगों को लगता है कि आप अपनी विल पावर से इस चीज से निकल सकते हो, आप पॉजिटिव रहो, आप ठीक हो जाओगे, आप बाहर घूम के आओ ठीक हो जाओगे. It is important to understand that it's a clinical condition. It requires treatment at the earliest. और आप जितना अगर ट्रीटमेंट डिले करोगे उतना ही ये और ज्यादा कराता जा सकता है. So again, to summarize, crying once in a while is all right, but if it is a trend, please get it screened and start the treatment at the earliest. I must agree with you, Prerna. Very rightly said. Emotion once in a while, everybody should have a right to cry also. Emotions should be let out also, है ना? ये सब बाहर आना चाहिए, and it is the trend which is important. Right. And I guess the worst thing to tell somebody who is down and who is crying is कि कुछ बात नहीं, चुप हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा. Absolutely. It's like undermining your suffering and pain. Yeah, it is more about thinking and logical decision and finding the way out. कि problem है, but now what can be done? How can we come out of this problem together? आई थिंक हम यही करते हैं मैम कि चुप हो जाइए, कुछ नहीं होगा, रोना नहीं है, क्यों रो रहे हो, चुप हो जाओ, जब कुछ हुआ नहीं. हम लोग प्रेशर कुकर की तरह उसे बंद करके रखते हैं. एंड जैसे प्रेरणा मैम और आपने बोला दैट इट इज अनड्यू एंड इट इज नॉट जस्टिफाइड फॉर द पेशेंट्स कि आप उनका वो कैप लगा के रखो. सो इट इज रॉन्ग. सो फॉर ऑल द केयर गिवर्स हु आर विद अस, प्लीज लिसन टू मैम, प्लीज लिसन टू प्रेरणा मैम एंड डू व्हाट दे से. हमें क्या करना चाहिए? अगर कोई रो रहा है तो लेट देम क्राई, जस्ट बी देयर फॉर देयर सपोर्ट, लेट देम एक्सप्रेस जो वो फील कर रहे हैं. एंड अगर लाइक प्रेरणा मैम हैज एड्रेस्ड वेरी करेक्टली, अगर इफ फॉर मोर देन अ वीक इट हैज अ प्रोलॉन्ग्ड बिहेवियर, इफ अ पर्सन इज क्राइंग फॉर मोर देन अ वीक और आप एक परसिस्टेंट बिहेवियर देख रहे हैं, देन प्लीज गेट दैट पर्सन स्क्रीन्ड, get her screened, get her treated, and she will be absolutely fine. So this is for all the caregivers who have joined with us right now. So allow me to also add another thing, Saima. Sometimes, for patient, it becomes very difficult to express their painful feelings to their absolute close ones or loved ones. So उन लोगों के लिए और ज्यादा जरूरी है that they are in one-to-one therapy with a psychologist or they are part of a larger support group. क्योंकि कई बार जो difficult emotions हम closed लोगों के साथ, closed ones के साथ नहीं share कर पाते, वो कई बार हम आसानी से एक न्यूट्रल पार्टी के सामने या और लोग जो ऐसे ही challenges से गुजर रहे हैं उनके सामने हम easily express कर पाते हैं. So it is also important to have these kind of backups. Speak, communication is the key. Communicate with your treating doctors, allay your fears, anxieties, communicate with the family, communicate with support groups, communicate with the therapist. So we need to have these multiple backups, multiple options and for communication for such patients. So we need to communicate, we need to have support groups, we need to, we should avoid being एक होता है ना inhibition to go to a support group या go to a doctor, to go to a clinical psychologist. नहीं, वहाँ नहीं जाना है. So हम सबको इन चीजों को खत्म करना है.
This is what is the crux of what Dr. Walia and Dr. Prerna has just now addressed. One question I'll take from Dr. Jyotsna. Like अभी जब बातें हो रही हैं anxiety की, depression की, so Dr. Jyotsna, how to deal with anxiety and depression through the different stages of life of a cancer patient, from diagnosis to treatment to end of treatment, because anxiety or depression हर stage में अलग level की होगी, so how to deal with it? Right. Thanks for the question, Saima. So first things first, सबसे पहले बहुत important है हमें अपनी situation को accept करना. Acceptance eases off half our problems. So accept things for what they are and focus on those things जो हमारे control में है. जो हमारे control में है ही नहीं, उस पे हम focus करके anxious होते रहते हैं, worry करते हैं, ठीक है? But let's just talk about the more important things. We need to get up, act, and go on with life. बहुत सारी चीजें कवर कर दी हैं डॉक्टर मीनू मैम ने एंड डॉक्टर प्रेरणा ने भी, बट there's one thing that I wanted to talk about is that anxiety and fear predominantly हम experience करते हैं because we fear the unknown. Okay, so we fear the uncertainty that comes with cancer. So here we need to practice mindfulness. Mindfulness का मतलब है present moment में रहना. बिकॉज हम प्रेजेंट में ही सबसे ज्यादा पावरफुल हैं. फ्यूचर में रहना, पास्ट में रहना इज द मोस्ट डैमेजिंग पैटर्न इन आवर लाइफ. हाउ टू प्रैक्टिस माइंडफुलनेस? लेट्स टॉक अबाउट दैट. सो mindfulness meditation is a specific technique, okay, where there are different kinds of meditation. You can resort to mantra chanting, you can resort to deep breathing or visualization. Okay, any sort of meditation जो आपको आपके surroundings का एहसास दिलाती हो, आपको आपके present moment में रहने का एहसास दिलाए, उस meditation को follow करें, ठीक है? Deep breathing करें और set routine and intentions. By setting routine and intention, when you wake up in the morning, you have tasks to accomplish, so you feel a sense of purpose. And then you have tasks to accomplish, तो आपको ये लगता है कि हाँ, कि मैं कुछ लाइफ में मीनिंगफुल कर रहा हूँ, या इससे कैंसर से लड़ने के लिए मैंने क्या क्या प्लान्स बनाए हैं और मैं कैसे उसको एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, ठीक है? Another thing I would say is take one day at a time. That's the best way to be in the present moment. Rather than thinking too much about the future, just see what is the best that you can do in the present moment. आज हम अपना बेस्ट कैसे दे सकते हैं और आज के हम टास्क कैसे अकम्प्लिश कर सकते हैं. एक और चीज के बारे में बात करूंगी मैं, which is relaxation exercises. So there is something called as progressive muscle relaxation exercise, and studies have shown that it has benefited cancer patients to a great deal. It's a very simple technique for 5 to 7 minutes, जो आपको इंटरनेट पे easily available है. You just have to follow the instructions and practice it daily. So अपनी लाइफ में से 10 मिनट मेडिटेशन के लिए निकालें और माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करें. Another thing, जैसे हमने बात करी थी कि do not isolate yourself, do not be in a shell, get out, socialize moderately, but surround yourself with the right kind of people. Invest in the right kind of activities, right kind of people, positive people. Engross yourself in joyful tasks. जो चीज आप अपने हॉबीज को मत छोड़िए, जो चीजें आप डे टू डे लाइफ में करते हैं, just carry on with that. Live a normal life as much as possible. Support group is another thing. Join a support group like Aashayein, where you can have a platform to share your feelings and your fear with like-minded people, or people who can understand you better, people who have been through the same. So yeah, these are a few things that I would like to say. Yeah. Thank you, Dr. Jyotsna. That was really elaborate.
mindfulness, meditation. I think all of us, even somebody who's not suffering from cancer, I may be suffering from something else. मेरे जिंदगी में और भी कोई परेशानी हो सकती है, and I'm sure this will help me as well. So this is for everybody. I think this is no Right. exception for any particular disease or any particular person. बिल्कुल. This can envelop the entire, everybody, because we all are absolutely suffering from something or the other. So thank you, Dr. Jyotsna. Thank you so much. So, एक line में from all three doctors, give me one mantra to increase willpower and increase positivity. All three doctors. We'll start from Dr. Walia. Meenu ma'am. Ma'am, you are on mute. I think let the psychologist say first, and then अच्छा, I'll ठीक be है. out to speak. Dr. Prerna, give me one mantra जो मैं सबको हर बार हर वक्त बोलूं कि this is the mantra to stay positive and increase willpower. Give me that, please. Ma'am, again I would like to say कि positivity जो है वो it's like a two-sided coin. Okay, it is important. Before I come to your question, I would like to give a disclaimer. You know, बहुत लोग के से हम ये सुनते हैं statement कि you need to be brave, you need to stay positive if you have to come out of it. No doubt, staying positive helps in better treatment compliance. आप अपनी diet का ख्याल रखते हैं, you quit negative habits, you quit all the unhealthy patterns. आप exercise करेंगे, आप diet का ध्यान रखेंगे, आप अपनी medicine treatment का ध्यान रखेंगे. उस sense में आपकी quality of life improve होगी. तो positivity का role वहाँ है to improve your quality of life. Again, it does not have direct impact on the life expectancy. It helps you to live better, may or may not have an impact on a longer life. क्योंकि अगर हम जहाँ ये कह रहे हैं कि पॉजिटिव रह के ही हम कैंसर से निकलेंगे, तो क्या हम इसका ये मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि जो लोग नहीं हो पाते पॉजिटिव या जो लोग एंजाइटी या डिप्रेशन होता है, क्या उन लोगों के लिए कैंसर का सक्सेसफुल आउटकम नहीं होता? So we need to remain positive in the sense to have a active lifestyle, to have a routine. जैसे कि मैम ने कहा mindfulness based techniques follow करें हम, but overemphasis on being positive all the time is what we need to watch out for, right? We need to allow the expression. So again, coming to on the mantras, if you ask how to improve quality of life, I would rather use the term quality of life rather than using an umbrella term of staying positive all the time. So quality of life के लिए, as Jyotsna ma'am also very rightly pointed out, we need to be in here and now. जब हम बहुत ज्यादा फ्यूचर के बारे में सोचते हैं तो हमारी कैटास्ट्रोफाइजिंग की अगर टेंडेंसी होती है तो हम सिर्फ वर्स्ट केस सिनेरियो हम इमेजिन कर पाते हैं. पास्ट के बारे में सोचते हैं तो हमें गिल्ट्स एंड रिग्रेट्स होने लगते हैं कि हमने कुछ ऐसा किया था वैसा किया था जिसकी वजह से आज हम इस सिचुएशन में. And both the scenario, either past or future, we don't have any control over them, है ना? हमारे कंट्रोल में क्या है? सिर्फ आज है, अभी है. So to have a sense of control over your situation, grip over your situation, we need to focus on things that are in our control, that are internal to us. Things that are external, कि हमारा ट्रीटमेंट कितने टाइम चलेगा, क्या साइड इफेक्ट्स होंगे, क्या हमारी स्टेजिंग है कैंसर की, these all things are not in our control, direct control. So इनके ऊपर हमें वरीज नहीं रखनी है. हमें फोकस रखना है कि हम अपने आप को जल्दी तंदुरुस्त करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं. So focus on your lifestyle habits, follow your doctor's advice to the T properly, उसको follow करें, compliance करें और अपने लिए एक रूटीन, एक स्ट्रक्चर जरूर रखें. केयर गिवर्स जो हैं उनकी भी केयर करें. कई बार हम कैंसर पेशेंट एक प्रायोरिटी बन जाते हैं और बाकी मेंबर साइडलाइन हो जाते हैं. उस केस में भी बर्नआउट होने लगता है एज अ फैमिली. वो बर्नआउट भी वापस कहीं ना कहीं घूम फिर के इफेक्ट करता है पेशेंट की खुद की पॉजिटिविटी पे. सो वी नीड टू टेक केयर ऑफ द होल फैमिली सिस्टम. उनको भी इन्वॉल्व होना चाहिए दूसरे लोगों की केयर में, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज में, जहां तक कि वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं. So all these things, help us in remaining on track, in remaining oriented to our life and treatment. Very, very aptly said, Prerna. I think beautifully concised.
Thank you, ma'am. Yes. You as well. So, Jyotsna, we will also want your take on this. Yes. So to increase your willpower, I think you have to set achievable goals and do not take too much at once. Take baby steps. ये मत सोचिए कि हमें कितना कुछ करना है, कैसे होगा, उसमें ज़्यादा ना पड़े. ठीक है? Take baby steps, plan ahead, and organize things well. And be prepared for what may come. Talk to your doctor about it. Whenever required, take that help. जो भी queries हैं आप पूछिए उनसे और उस हिसाब से आप आगे का plan करिए. Yeah, that's what I would say. It was so well concise, Dr. Jyotsna. So, Dr. Meenuwalia, would you like to add something to this? Yeah, I think both our psychologists have very nicely concise the entire thing. And I will only want to say one thing, what actually I tell my patients. I don't know, I'm not an expert on this, I'm not a psychologist, but I always tell my patients, कहीं पे पढ़ा था कि एक लाइन को हमेशा याद रखना कि जब बहुत ज्यादा सब राइट चल रहा है ना, आपको हवा में उड़ने नहीं देगा, जमीन पे रखेगा, और जब बहुत सब नेगेटिव चल रहा है तब भी आपको डूबने नहीं देगी. And that line is, this too shall pass. Always remember this. कि this too shall pass. अगर अच्छे दिन नहीं रहे, बहुत सबके साथ लाइफ में हमेशा सब कुछ नहीं चलता, तो ये भी अगर बुरा दिन भी है तो this also has to pass. So भगवान से इतनी है कि बस इतनी हिम्मत दो कि ये भी पास हो जाएगा. And I think if you remember this mantra कि इसने भी चले जाना है, इस विपता ने भी चले जाना है, this too also has to pass, that itself is a source of strength. Absolutely. So beautiful said, ma'am. In fact, आप ही से inspiration लेते हुए, it just reminded me of this quote. कहीं मैंने भी ये कैंसर के दौरान लिटरेचर में this line came कि you have to remember that you're not dying of cancer, you are living with cancer. आप जी रहे हो with a cancer diagnosis, and you are much more than just a cancer patient. You are an individual besides this diagnosis also. Absolutely. So this too shall pass, and you are an individual besides and cancer patient. So इससे ज़्यादा बेहतरीन और खूबसूरत lines हमें नहीं मिल सकती. And Dr. Jyotsna की mindfulness, living with meditation, mindfulness, and all these philosophies that she has given were absolutely brilliant. Dr. Prerna, Dr. Jyotsna, Dr. Meenuwalia, heartfelt gratitude. Thank you so much for answering all these questions and all the questions that anybody else wants to ask. Just एक आप हमें chat box में लिख दीजिए या personal mail कर दीजिए आपके सवालों का, आपके हर सवाल का जवाब हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे. So once again, thank you to all three doctors, all three beautiful doctors in the panel today. Women empowered, आज हम पूरी नारी शक्ति का वो कर रहे हैं. All three beautiful women doctors are here with us. So thank you to all of you. And moving on to another Nari Shakti, our Shakti, which is an absolute Shakti. I'm telling you, this woman is made up of steel. So now moving on to our next segment, Kahani Yodha Ki. So I would like to introduce my special invitee. She is a beautiful person, a beautiful soul. It gives me immense gratification to introduce her. And before I introduce her, 4 lines for her, which I have made. सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो, सभी है भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो, इधर उधर कई मंजिलें हैं, जो चल सको तो चलो, बने बनाए हैं साचे, जो ढल सको तो चलो. An iron lady, Fauji, where the blood is made up of literally all the Fauji blood is running in her veins. So we have palliative care counselor associated with a Mumbai-based cancer non-governmental organization, Miss Vandana Mahajan, with us. She works as a volunteer counselor in the thoracic disease management group at the Tata Memorial Hospital and also provides cancer counseling to patients across India via online platforms. And I know the amount of counseling and the amount of one-to-one association she has with her patients. I have seen it. If I am in need and if I need something, I just have to message Vandana ma'am and she's there. So this is what she is, and she herself is a cancer survivor. So I will not take any of, not even a second more, and I will hand over the podium to Vandana ma'am. We welcome you, ma'am.
Thank you so much, Saima. My heart, I am so touched. Thank you, Dr. Walia. It's so good to see you again. This is the second time I'm meeting you here on this forum. And thank you so much. My heartfelt gratitude for giving me this opportunity. And thank you to all the psychologists for a wonderful insight into the feelings that a cancer patient goes through. Mostly our feelings are ignored. Because somehow the emphasis is on treating the physical body, not so the emotional baggage that comes with cancer. So thank you so much for your lovely insights. And Saima, I will have to meet you in person and give you the tightest possible hug. It's long overdue. So मेरी कहानी बहुत ही interesting है. मेरे कुछ friends भी यहाँ पे हैं. So quickly I will summarize my kahani. It's been 12 and a half years. I was diagnosed with thyroid cancer and मेरी जब पहली सर्जरी हुई तो मेरी आवाज चली गई. मेरे को 1 साल मैं बोल नहीं पाती थी. मैं क्रोक करती थी मेंढक की तरह. And today the voice that I have has taken a lot of effort to get it back. I suffer from voice fatigue. मैं ज़्यादा बोलती हूँ तो मेरी आवाज अपने आप मेरे को बोलती है कम बोलो, ऑटो कट है. Post my first surgery, when they did the biopsy on the nodule, I had a big 4-centimeter nodule. When the biopsy was done on it, they found out that I had one of a rare form of thyroid cancers. And मेरी 1 हफ्ते बाद दूसरी सर्जरी हुई. जब मेरी दूसरी सर्जरी हुई तो सर्जरी के 2 दिन बाद I had a cardiac arrest. मैंने अपने आप को मरते हुए देखा है. I went into rigor mortis. रिगर मोर्टिस वो होता है जो एक डेड बॉडी को होता है जो अकड़ जाती है. I've seen myself die. My muscles they spasmed and वो अकड़ गए थे. I was sitting in the car and I told my husband I don't think I'll make it. My young daughter was also there with me and I remember मेरी body अकड़ने लगी थी. My cheeks went in, my eyes wouldn't shut, my tongue rolled up and my mouth went like that. मेरी पूरी body, it was like log. And जब हम कार में बैठने लगे तो मेरी माँ ने मेरे को एक टेट्रा पैक जूस का दिया and she was shaking and I tried to hold it and my fingers wouldn't close on it. We sat in the car and I started slipping and I told my husband I wasn't able to talk and I told him I don't think I'll make it. But I think वो ऊपर वाला सब कुछ उसके हाथ में है. जब वो तुम्हें जब तक तुम्हारा समय नहीं आता ना तब तक कोई नहीं लेके जा सकता. Anyways, we managed to reach a hospital and the doctor said had I been I suffered a cardiac arrest and the doctor said had it been another fraction of a second later I wouldn't have made it. And आप मेरे को सुनते नहीं आज शायद मैं एक मीठी सी मेमोरी रह जाती कहीं पे. So I underwent thyroid treatment. Thyroid cancer का treatment is very different from the other cancer treatments, and I don't want to dwell too much on it. But 6 साल मैं जूझती रही इस treatment के साथ. रेडियो एक्टिविटी खानी पड़ती थी, नमक छोड़ना पड़ता था. My TSH would go up to 150. मेरे से आधी रोटी भी नहीं खाई जाती थी. In these 6 years, there were numerous times when I was told the cancer's back. वो तुम्हारी bones में चला गया है, तुम्हारी blood में चला गया है. कितने स्कैन हो गए. लेकिन शायद अभी जीना था, आप सबसे मिलना था, लोगों की जिंदगी में एक change लाना था. So and also very importantly, I wasn't ready to die. Which I firmly believe that इच्छा शक्ति बहुत काम करती है. और मैंने my daughter has been a source of inspiration for me. उसको देख के मैंने सोचा कि इसको जन्म दिया है तो उसको बड़ा करना है, इसको कॉलेज जाते हुए देखना है, इसके आगे की जीवन देखना है. तो सोच लिया मरना तो है ही नहीं अभी. तो जब वो सोच लिया तो जितने भी हिकअप्स आए वो जिंदगी में आते रहे और मैं उनको fortunately by God's grace I was able to overcome them. It's been a very very tough journey and cancer के साथ बहुत सारे baggages आते हैं which we don't address.
सो मैं कुछ उनके बारे में भी बात करना चाहती हूँ। कैंसर फिजिकली तो आपको ट्रीटमेंट एग्जॉस्ट कर देता है, इमोशनली इट टेक्स अ ह्यूज टोल ऑन योर बॉडी, इमोशनली ह्यूज टोल। और अनफॉर्चुनेटली जो इमोशनल एस्पेक्ट है वो बहुत रेयरली एड्रेस होता है। तो मैं थोड़ा अपनी जिंदगी के बारे में आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि मैं इमोशनल जो चैलेंजेस थे उनको मैंने कैसे डील किया। मैं उनको अपने लाइफ हैक्स बोलती हूँ। साथ में मैं आपको कुछ और भी बताना चाहती हूँ। आई वांटेड टू कीप इट वेरी कंसाइज क्योंकि टाइम इज शॉर्ट। मेरे को ड्यूरिंग when I had a cardiac arrest and when I was revived, I was told that मेरी बॉडी ने कैल्शियम बनाना छोड़ दिया है। और मेरे को बहुत हेवी डोज ऑफ कैल्शियम पे रखा गया। मेरे जैसे नोन केसेस, देयर आर ओनली 1% नोन केसेस लाइक मी इन दिस वर्ल्ड। मैं आज रोज की कम से कम 15 से 16 गोली खाती हूँ अगला दिन देखने के लिए। अगर मैं आज दवा नहीं खाऊंगी तो मैं कल मर जाऊंगी, और ये मेरी रियलिटी है। It's tough. I live with I think load full of medical challenges. मेरी बोन हेल्थ, मेरे चलते चलते पैर मुड़ जाता है तो मैं फ्रैक्चर हो जाता है। I've been forbidden to take a fall. 2 बार मेरा पैर मुड़ा और मेरी हड्डी टूट गई सिर्फ पैर मुड़ने से। मेरे को अनकंट्रोल्ड एस्मा है, मेरे को टैकीकार्डिया है, मेरी डिजेशन इज वेरी पुअर। मैं रोज की ओपियोइड खाती हूँ, दो I'm on a heavy opioid to control the pains that I suffer because of my treatment. But फिर भी जिंदगी बहुत खूबसूरत है। और जब मेरा ये सब ट्रीटमेंट चल रहा था तो मेरा कार एक्सीडेंट भी हुआ। कार turned turtle thrice, but I came out alive. So सबसे बड़ा लाइफ लेसन मैंने अपनी जिंदगी में ये सीखा है, मरना तो सबने एक दिन है। कोई भी ऐसा नहीं है जो जिंदगी भर, मतलब कोई आप जानते हैं किसी को जो कभी मरा नहीं, लेकिन जब तक समय नहीं आएगा तब तक आप नहीं जाएंगे। चाहे कैंसर हो जाए, चाहे कार एक्सीडेंट हो जाए। कुकर भी फट गया था मेरे किचन में, लेकिन मेरा समय नहीं आया। तो मैं आप सबको ये बोलना चाहती हूँ कि कैंसर को डेथ सेंटेंस मत मानिए। जब तक आपका समय उस ऊपर वाले ने लिखा है आपको कोई नहीं लेके जा सकता। और जब समय आएगा आपको कैंसर की जरूरत नहीं, कोई भी छींक मारेंगे, हार्ट अटैक आ जाएगा और आप चले जाएंगे। तो माय लाइफ, the biggest mantra of my life that I live by is each of us, we die one day. Everybody here will die one day. But the day we are not dead, we are alive. And there are so many days that we get to live. So instead of fearing death, मरने के डर को don't pay emphasis on the fear of death. Enjoy every day that you are alive. और अगर आप ये अच्छे से अपना हर एक दिन जीते हैं ना, तो जब मरेंगे तो विदाउट रिग्रेट्स मरेंगे। मेरी बात ये मान लीजिएगा आप। so that is what I work on. और कुछ लाइफ हैक्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, बिकॉज आई थिंक कैंसर जर्नी हम सबकी demanding होती है। We all go through emotional struggles, physical struggles. What we can do is handhold each other, because जो यहाँ पे कैंसर सर्वाइवर्स हैं, जो कैंसर पेशेंट्स हैं, हम एक दूसरे का दर्द बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, एक दूसरे की इमोशनल टर्मोइल्स बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। तो मैं टाटा में काम करती हूँ और हम जब भी पेशेंट्स को से बात करती हूँ, मैं उनको सिर्फ एक ही बात बोलती हूँ, आपकी जर्नी से मैं बहुत कुछ सीखती हूँ और शायद मेरे एक्सपीरियंस से आप कुछ सीख पाए। So it is a give and take process. So मैं अपना आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। मैंने आज तक, मेरे को जिंदगी से कोई गिला शिकवा नहीं है, कोई भी। क्यों हुआ, कैसे हुआ, मैं बहुत हेल्दी इंडिविजुअल थी। मैंने आज तक ये नहीं पूछा why me. There is no answer for why me. Never ever. कैंसर किसी को भी हो सकता है, तो अपना समय व्यर्थ मत गवाइए। वाई मी का कभी कोई आंसर नहीं मिल सकता, कभी भी नहीं मिल सकता।
जो पास्ट है ना वो गुजर गया। बहुत सारे पेशेंट हैं, they sit and analyze, start analyzing, अच्छा मैंने कुछ गलत खाया होगा, मेरे कर्म बुरे होंगे, शायद तब मेरे को हो गया। जो पास्ट में हो गया उधर जाके अपना समय व्यर्थ मत गवाइए। कल क्या होगा वो भी नहीं पता है, बिल्कुल नहीं पता है कल क्या होगा। लेकिन आज मैं जो इस वक्त इस टाइम आप लोगों से बात कर रही हूँ, that is my time. And इस टाइम I would like to live my life to the fullest. And मैं चाहती हूँ कि अगर सपोज मेरा कल नहीं आता है तो आज आप लोग सब वंदना को इस तरह रिमेम्बर कीजिए कि वो आज को कितना जिंदा दिली से जीती थी। तो ये मेरा that is another of my life hacks. नेक्स्ट इज मैं अपनी फेवरेट हूँ, मेरे को किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं डॉक्टर वालिया की बात सुन रही थी कि जब साइमा ने क्वेश्चन पूछा तो मैंने उसको मैसेज किया था मैं आंसर कर सकती हूँ इसका। मेरे गले में बहुत सारे स्टिचेस लगे थे तो मैं अपने हस्बैंड, मैं वैसे फौजी की बेटी हूँ और फौजी की बीवी हूँ, तो मेरे अंदर खून बहुत जोश वाला खून है। तो सर्जरी के 3 दिन बाद वाला बोला मैंने अपने हस्बैंड को पिक्चर देखने जाना है, पिक्चर देखने भी चले गए। कोई मिला जान पहचान वाला तो उसने मेरी तरफ देखा और नजरें झुका के बोला वंदना सो सॉरी यू गॉट कैंसर। आवाज मेंढक की तरह निकलती थी, खून बहुत खौला, बहुत my blood boiled. I looked at that person and I said and I croaked. I said sorry किसके लिए बोल रहे हैं सर, मैं तो अपने पैरों पे हूँ, जिंदा खड़ी हूँ, जब मर जाऊंगी तो भी मेरे लिए सॉरी मत बोलना, because my fight you have no clue about. And that day and आज का दिन मेरे को नहीं पता मैं कितना जीऊंगी with all these health struggles, but मैं किसी को अपने लिए सॉरी नहीं फील होने देती। तो आप सब जो यहाँ पे हैं, आपसे ये सिर्फ एक from a survivor to a patient or a survivor, आपकी जर्नी बहुत यूनिक है, आपके स्ट्रगल्स बहुत यूनिक हैं। तो किसी को कोई हक नहीं है कि आप पे तरस खाए, आप पे पिटी खाए। आपको ये इकोसिस्टम अपने आप क्रिएट करना है, अपनी विल पावर से और अपने माइंड की एबिलिटी से। एक चीज और मैं बताना चाहती हूँ, जिंदगी कभी नॉर्मल नहीं हो सकती, बिल्कुल सच बात बोल रही हूँ। It is an absolute illusion if you feel that your life will be normal. जो मेरी सर्जरी से पहले थी, मैं कोई 16 गोली खा के थोड़ी जिंदगी काटती थी, मैं कोई ओपियोइड्स खाती थोड़ी थी कि अपनी पेन के वो कंट्रोल कर पाऊं, रात भर नींद नहीं आती, इतनी तकलीफ होती है। लेकिन in spite of that, I have created my own normal. आपको अपना नॉर्मल खुद क्रिएट करना है। बहुत जरूरी है कि ये ना कभी बोले कि अच्छा मैं उससे पहले तो 10 किलोमीटर दौड़ लेती थी, अब तो मैं 2 नहीं दौड़ पाती। आपकी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आए हैं। Accept what has happened to you. Very important is accepting that you are going through something really difficult, and then work on your life and work on creating a new normal for yourself. 2 लोगों का नॉर्मल कभी सेम नहीं हो सकता। मेरे फ्रेंड हैं यहाँ पे, मेहुल है, मेरी एक और फ्रेंड है who been through cancer, उनका नॉर्मल और मेरा नॉर्मल बहुत फर्क है। लिव बाय योर ओन नॉर्मल। और मैं बता रही हूँ आपका नॉर्मल आपको जिंदगी को जिंदा दिली से जीने देगा। अगला, अपने डॉक्टर पे इमेंस फेथ होना चाहिए आपका, इमेंस फेथ। सबसे जरूरी है अपने डॉक्टर को ट्रस्ट करना। आपका डॉक्टर जो है वो आपका लाइफ लॉन्ग साथ ही रहेगा। ये मेरे डॉक्टर ने मेरे को बोला था कि वंदना तू पूरी जिंदगी 2 लोगों को देखेगी, एक अपने पति को और एक अपने ऑन्कोलॉजिस्ट को। तो अपने डॉक्टर को ट्रस्ट कीजिए। आपका डॉक्टर आपका फ्रेंड ही नहीं है, आपका गाइड है, आपका मेंटोर है, और वो आपको जिंदा रख रहा है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू ट्रस्ट योर डॉक्टर। एक और बड़ी जरूरी बात है, जिंदगी सिर्फ कैंसर, माई लाइफ इज नॉट डिफाइंड बाय कैंसर, इट इज नॉट। 3 weeks a month back again I underwent an ultrasound because my voice changed and my oncologist felt the disease could be back. But I don't let cancer define me. मेरी जिंदगी में बहुत कुछ है,
मेरे दोस्त हैं, मेरी बेटी है, मेरे हस्बैंड है, मेरे डॉग है, मेरी माँ है, मेरे भाई बहन है। आई लाइक टू ड्रेस अप, मैं पिक्चर देखने जाती हूँ, मैं डांस करती हूँ, अभी बेली डांसिंग सीख रही हूँ। तो मेरी जिंदगी में गुलाब जामुन है, आइसक्रीम है। My life is not defined by cancer. I refuse to let it be defined by cancer. I refuse to let people call me a cancer survivor. I am Vandana, who has been through a difficult disease, but my life is defined by what I have made of myself. So आज मेरा जीवन दूसरे कैंसर पेशेंट्स के लिए डेडिकेटेड है. I work with palliative patients, end of life patients, because मेरे को लगता है हमारी कंट्री में डेथ एंड डाइंग के बारे में इतना अवेयरनेस नहीं है, और मैं बिकॉज आई हैव एक्सपीरियंस डेथ, तो मैं आज टर्मिनल कैंसर पेशेंट्स के साथ काम करती हूँ. एक चीज और, रेकरेंस का डर हमेशा रहेगा. अगर कोई आपको बोलता है कि आपका कैंसर ठीक हो गया, नहीं आएगा वापस, गलत बोलता है. आपके डॉक्टर कभी नहीं बोलेंगे. आपको रेगुलर फॉलोअप्स के लिए क्यों बुलाते हैं? क्योंकि द नेचर ऑफ द डिजीज इज सच, ये कभी भी आ सकती है, या हो सकता है ना ही आए वापस. तो अगर आपको बिलीव करना है कि जो डॉक्टर ने बोला है, रेगुलर फॉलोअप्स के लिए जाना है, और आपकी बॉडी में कुछ भी अमिस लगता है, तो प्लीज जो आपका लाइफ पार्टनर के अलावा जो आपका एक और लाइफ पार्टनर है, दौड़ के उसके पास जाइए और बोलिए, देखिए मेरे को ये प्रॉब्लम है, बताइए क्या सोल्यूशन है. नेवर बिलीव कि मैं 2 साल हो गए फॉलोअप्स के लिए, अब मैं नहीं जाऊंगी. I've seen lot of patients falter here and lose their lives. So please be regular with your follow-ups. और जिंदगी में पर्पस जरूर ढूंढिए. जिंदगी आसान नहीं है. कैंसर की बीमारी बहुत मुश्किल बीमारी है, इसीलिए find a purpose in your life. The purpose can be anything. The purpose can be wanting to help other cancer patients. The purpose could be develop a hobby, gardening कर लीजिए, sketching कर लीजिए. जिंदगी में पर्पस जब होता है ना, तो जिंदगी आगे बढ़ने की चाह होती है. अगर पर्पस नहीं है तो यहीं अटके रह जाएंगे. कैंसर will become bigger than us. So जिंदगी में पर्पस होना बहुत बहुत जरूरी है. और मैं क्या बोलूं, जो बीत गया उसके बारे में मैं सोचती नहीं. कल क्या होगा उसका मेरे को कोई टेंशन नहीं है. आज हूँ, आज अलाइव हूँ. भगवान ने ब्लेसिंग दी है that I'm alive today, and I enjoy my life to the fullest. And with that, I just want to end with a song. It's called, it's a very old number from the movie Waqt. आगे भी जाने न तू, पीछे भी जाने न तू, जो भी है बस यही एक पल है. So that's about me. Thank you so much for giving me this opportunity. Grateful, Dr. Walia and Saima, my friend. I can't tell you how much. You have no idea. काश मुझे सीटी बजानी आती तो इस वक्त मैं बैठकर सीटियां बजा रही होती आपके लिए, वंदना मैम. It was, I'm like mind boggled me. What have you said? Oh my God. You have made the entire session so fruitful. आप easily अपनी journey बता के जा सकती थी, but you have added so much more to take away from this session home. सबके लिए, even for me. Thank you so much, वंदना मैम. मैं भूल गई हूँ मैं आपके लिए क्या बोलने वाली थी, मैंने क्या लिखा था, क्या कहने वाली थी. आपने सब कुछ इतनी खूबसूरती से कह दिया और इतनी बातें अच्छी कह दी जो शायद आज मौजूद यहाँ हर एक शख्स की जिंदगी में इतनी इम्पोर्टेंस रखेंगी और रखती होंगी, और हमने आज तक इग्नोर करी. The one thing that I've learned from you, I regretted actually. मैंने अपनी माँ को कभी डेथ के बारे में बात करने नहीं दी. Whenever she used to, मैं उन्हें चुप करा देती थी. And I used to say, मम्मी मुझसे ऐसी बातें मत करो. But मैंने आपसे ये बात सीखी है और मैं आगे सिखाती हूँ that it is okay to talk about death. Please talk about it. Absolutely, Saima. जी. और मैं since I work with terminal patients, we talk about it. We talk about advanced planning. We talk about regrets. We talk about what legacy they would like to leave behind, because the dying need to be cared for. Okay, the dying should die a dignified death. So that is why death is
is an inevitability like life. I think we rejoice when that there's a birth in the family. Equally, we should accept the inevitability of death. So with these golden words of Vandana, I always call you Dr. Vandana Mahajan. You know that? I always call you Doctor, and it is like खुद ही खुद निकलता है. साइमा, बनना तो मैं डॉक्टर चाहती थी, लेकिन जिंदगी ने कुछ ऐसा ट्विस्ट किया कि पक्की पेशेंट बन गई हूँ मैं. कोई ऐसा डॉक्टर नहीं है जो मेरी लिस्ट में नहीं है फ्रॉम एन ऑन्कोलॉजिस्ट. अभी तो डर्मेटोलॉजिस्ट भी ऐड हो गया. साइमा बोला कोई ऑटो इम्यून डिजीज है मेरी. तो पूरी मतलब आपको लिस्ट बता सकती हूँ कौन से ऑलॉजिस्ट है मेरी लिस्ट में. मैम ने अभी हमें लिखा है मोर पावर टू आशाएं. हम अगर हमारे साथ महाजन जैसी और 2-4 लोग जुड़ जाएं, सो एब्सोल्युटली आवर आशाएं विल बी सो पावरफुल. डॉक्टर मीनू वालिया, मेरे पास अब कोई शब्द नहीं बचा मैम के लिए कुछ भी कहने के लिए. सो प्लीज आई वुड लाइक टू हैव अ फ्यू वर्ड्स फ्रॉम यू एंड आई वुड लाइक टू वेलकम यू टू फेलिसिटेट मिस वंदना महाजन. I think I'm honored and humbled to felicitate Vandana today after listening to her life hacks. मुझे लग रहा है मैं बिल्कुल मेरी वो पोजीशन हो रही है जो साइमा की है. इतनी मैं भाव विभोर हो गई हूँ वंदना को सुनने के बाद कि मेरे पास शब्द नहीं है. मतलब she has made the entire thing very, very meaningful today because she has not just come up with her story. She has come up with life hacks, and each of these life hacks was so wonderful and had everything in that. मतलब मुझे लगा कि शायद यही है जो सिर्फ कैंसर पेशेंट नहीं, सबके लिए इम्पोर्टेंट है, हमारे लिए भी इम्पोर्टेंट है. for everybody is important, and she is so beautifully she has put it कि शायद शब्द ही नहीं है ये कहने के लिए जो हम इतने शब्दों में इतनी सारे बातों में बोलना चाहते हैं. She has just given so simply in such wonderful hacks, and it's something, it's amazing, this thought process, and that is the reason I think which is carrying on with her. And this inspiration, I hope it is infectious to each one who is listening to this session, and to each one of you who will be listening in the future. मतलब जो भी इसको सुन रहे हैं, जो भी इसको आज सुन रहे हैं, they all got inspired from Vandana. बिल्कुल. And all these life hacks, I think it should, I mean इसकी एक समरी बना के हमें बाद में भी डालनी चाहिए कि life hacks by Vandana, the beautiful life hacks. Thank you. Yes, Thank you. life का मतलब ही यही है. So Vandana, I think I'm honored and humbled to felicitate you, and I'm really jealous of Tata to have you, and why we at Max and we at Delhi don't have you. I mean, so our patients should also benefit somebody like you in the counseling team. But ma'am, I'm moving to Delhi in 2-3 years, and I'm going to reach out to you. We are planning to settle in Delhi, so I will definitely reach out to you. So that will be great, and I will be looking out for that space. Absolutely. So when Vandana is there we will have many more opportunities to work together in future and try to make meaningful differences in everybody's lives, not only patients, in our own lives also. मैंने पकड़ के रखा हुआ है. Thank you so much, Dr. She is there, मैंने पकड़ के रखा है वंदना मैम को, and I'm looking out. जैसी मैम शिफ्ट करेंगी, and I'll just grab and bring her to you. Anything that I can do for the cause of cancer, anything. My life is dedicated. Just आप हमारी मन की तालियां अपने कानों तक सुनिए, और वो तालियां बहुत सारे इमोशंस, बहुत सारे आभार, बहुत सारे ग्रैटिट्यूड से भरी हुई हैं. We are just honored to have you, Vandana ma'am. Thank you so much. Actually, Saima, अगर ये physical program होता तो I think we would have all got up and given a standing oration to Vandana. I'm truly humbled. नहीं आती नहीं, unfortunately अभी बजा रही होती मैं. I'm humbled, truly humbled, really humbled, Dr. Vandana. Thank and you. I hope to see you soon now, whenever I'm in Delhi next. मैं पकड़ के ले जाऊंगी आपको वंदना मैम. कैसे
मैं पकड़ के क्या डॉक्टर वालिया से मिलने के लिए तो मैं ऐसे ही चल पड़ूंगी तेरे साथ. ठीक है. Alright, thank you very much. Thank you very much. So moving on, I think quiz का question ही मैंने बदल दिया है अब. And this is the best segment now. हमारा quiz, जो भी सबसे पहले जवाब देगा in the chat box will get a gift. A gift, a beautiful gift from Dr. Meenu Walia. So, and the winners will be announced in the next session. So I'll ask 2 questions. Okay. So the first question is, what are the life hacks given by Dr. Vandana Mahajan? Not Dr. Vandana Mahajan, Miss Vandana Mahajan, which goes by default mere muh se. So what are the hacks? What are the 4 life hacks which Miss Vandana Mahajan just told or spoke about? Question number 1. I'll repeat once again. What are the 4 life hacks which Miss Vandana Mahajan just told about? Number 2. Question number 2. What is the mantra given by Dr. Meenu Walia and by Dr. Prerna about how to increase willpower? The mantra to increase willpower. Number 2, number 1, life hacks. Number 1, life hacks. Number 2, mantra for increasing willpower. Yeah, why you want that? And she's Abhishek and she's irritating. See, yes. Okay, so chat box पे आप लिख सकते हैं. I will Saheli is there to see the responses. Monitor the chat box. Yeah, Saheli, please monitor the chat box. And Kiran is giving the answer जो गलत है. Okay. Kiran, you're disqualified. Okay, so let's move on. I would before I think Meenu Walia is there. Dr. Meenu Walia, ma'am, are you there? I hope you've not left. Yeah. So, ma'am, please introduce the next session and please give closing remarks. So, first of all, I would thank everybody जिन सबने आज फिर से टाइम लगाया और जो आशाओं के साथ जुड़े हैं और जुड़ते जा रहे हैं. एंड आप सबके सजेशन से ही हमें मिलेगा कि व्हाट इज मीनिंगफुल एंड व्हाट शुड बी द नेक्स्ट सेशन अबाउट. It is not about just having a meeting. It is about कि after every meeting we all gain from it. हम सबके पास कुछ ना कुछ ऐसा हो जिससे हमारी लाइफ में कुछ बेहतर हो, कुछ सोचने के लिए हो, कुछ समझने के लिए हो, कुछ करने के लिए हो. And today was another one session that was, I really feel, very meaningful in all our lives. And the next similar session that we are going to talk about, can I have on the screen? So हमारा जो next episode होएगा, and that will now going to be about how to regain body confidence after cancer. So हम बातें करेंगे कैंसर की दौरान जर्नी में सबसे ज्यादा सबको क्या तंग करता है. बाल चले जाएंगे, रंग काला हो जाएगा, हम शायद ऐसे नहीं दिखेंगे, हम क्या दिखेंगे, हमारी शायद शरीर भद्दा हो जाएगा, मुंह टेढ़ा हो जाएगा माउथ सर्जरीज के बाद, या ब्रेस्ट सर्जरीज के बाद हमारी एक ब्रेस्ट रिमूव हो जाएगी. Yes, life may be slightly different than the normal path, but there are ways, there are simple ways जिससे life can still help us to gain confidence. So we will be having very special invites in our next session. We'll have a makeover person and so many other hacks how we can cope up best while maintaining our confidence, while maintaining our body image during cancer journey. So looking forward to our next session soon. And with that, over to you, Saima. Yes, ma'am. So looking forward to having you all and even more in our next session. So in our next session, मैंने वंदना महाजन मैम की एक बात एकदम गार्ड बांध ली है, मैं अपनी फेवरेट हूँ. So in the next session, we will हमें इस बात को चैंट करना है कि मैं अपनी फेवरेट हूँ. My body, my rules. Simple. And we will have experts with us to talk about how जो हमारी physical appearance है, it goes under so much trauma after the entire cancer treatment. So how to undo that trauma? We cannot undo that trauma, but we can undo that trauma physically. जो physical appearance है उसको कैसे makeover देना है? How to beautify your already beautiful souls? So we are already beautiful, but हाँ थोड़ा बहुत मैं अगर बिना lipstick और बिना काजल और बिना बिंदी के नजर आऊँ तो मुझे शायद सहेली आज पहचानी नहीं थी. She was like, "What is wrong with you?" And I said, "I'm fasting. Give me 2 minutes. I look normal." So हम already beautiful हैं.
सो हमको थोड़ा और ब्यूटीफुल बनाने के लिए हमने ये नेक्स्ट सेशन रखा है. So हम बात करेंगे how to deal with our changed body image, how to beautify our already beautiful warriors. So आशाएं कि अगले एपिसोड में हमारे साथ जुड़े रहिएगा. हमें आपका इंतजार रहता है और रहेगा. So with these beautiful lines मैं end करूंगी. वापस आना पड़ता है, फिर वापस आना पड़ता है. लेकिन मैं इन लाइंस के छोड़ के मैं अपनी लाइंस जोड़ती हूँ और मैं आपको अपना गाना याद दिलाती हूँ. एक आशा तेरी, एक आशा मेरी, मिलकर करेंगे अधूरी कहानी पूरी. आई एम सो सॉरी फॉर माई बैड सिंगिंग, बट यस, एक आशा तेरी, एक आशा मेरी, मिलकर करेंगे अधूरी कहानी पूरी. So with this, we at Aashayein will meet you soon with new zeal, zest, promises, and a tank full of willpower. Till then, stay healthy, stay hopeful, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, उम्मीदों की रोशनी से उज्जवल रहिए. Thank you so much, all of you. Thank you so much, ma'am, and everybody who was there with us today. Thank you all. Saima, thank you. Thank you. मैम को भी बहुत बहुत धन्यवाद. Thank you. सबकी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद. Thank you. Hello, ma'am. Thank you, ma'am. एक message. I joined late, but it was really very awesome, Veena ma'am. Thank you.